Our top story, the fiery start to the budget session of Parliament. First, Prime Minister Modi claimed foreign hand in Parliament disruptions, then a remark, two separate incidents. Then a remark made by Sonia Gandhi on President Draupadi Murmu's speech triggered a storm. Here's what exactly happened. Budget session kicks off to a fiery start. Prime Minister Narendra Modi, in his remarks ahead of the budget session, pointed at Parliament disruptions in the past and accused the opposition of aligning with foreign agencies. 2014 से लेकर अब तक शायद पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से 14 से देख रहा हूं। हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे। The opposition dismissed Prime Minister's charges. हम बीजेपी माफी की मांग कर रहे हैं। जिस खाई में इन्होंने इस देश को डुबोया है, पहले उसके लिए माफी मांगे। The showdown between the government and opposition escalated after Congress MP Sonia Gandhi's comment on President Draupadi Murmu's address to Parliament, suggesting the president got tired giving the long speech. Boring. No comment. No, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. The Rashtrapati Bhavan reacted saying the comments clearly hurt the dignity of the high office. President's House said the remarks are unacceptable. Rashtrapati Bhavan added that the president was not tired at any point. While Prime Minister Modi called Sonia Gandhi's statement an insult to tribals, Congress leader Priyanka Gandhi denied the charge. उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। My mother is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects, in fact, she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted by the media. They are both respected people. They are older than us. They are a certain age now. Many opposition leaders questioned why the president's speech did not mention the tragedy at the Kumbh Mela that left at least 30 dead earlier this week. देखिए, प्रेसिडेंट स्पीच से ज्यादा जरूरी है कुंभ में जो लोग अभी भी लापता हैं, लोग आशंका में हैं कि उनके परिवार के सदस्य कहां हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों की सूची जारी करे। सरकार और कितनी मदद करेगी पैसे की, और जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही कुंभ का कारोबार जो होगा 2 लाख करोड़ का होगा कारोबार। ये कारोबार करने के लिए महाकुंभ लगाए क्या? राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश की बात होनी चाहिए, पर ये केवल सरकारी पब्लिसिटी का एक निराशाजनक पुलिंदा बनकर रह गया। ये दुर्भाग्य की बात है। महाकुंभ का नाम तो लिया गया, पर महाकुंभ की त्रासदी की चर्चा नहीं हुई। The Narendra Modi government has declared many big legislative decisions will be taken in the budget session. But if the first day of the meet is any indication, then we are set for a stormy session ahead. With Piyush Mishra and Mosmi Singh, Bureau Report, India Today.